Hello, hi everyone. This is Tanu Virmani from babycode IELTS. So today's session is about how you can perform best with your part 1. What is part 1 of your IELTS speaking? So we will look in detail the part 1 questions, some of the sample answers, and how you can prepare for part 1 so that you can score better here. Okay? So let's get started. What is part 1? As in the last session, we have already discussed about part 1, that part 1 is a kind of a part in which you have the easiest question, the most familiar questions in the part 1. So we will look at some of the tips that how you can successfully prepare. So in this part, what you are supposed to do, you have to continuously speak for 1 to 2 sentences. जो भी आपसे question पूछा गया है, उसका answer आपको at least 1 to 2 sentences में देना. And this part is also called as easiest part. Now, why it is called as easiest? Because it is a familiar one. आपसे आपके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, right? Part 1 आपसे related होता है. It's about you. आपका name क्या है, आपकी likes क्या हैं, आपकी dislike क्या हैं. So all the questions are very easy and you can frame your answer for 1 to 2 sentences, right? इस पार्ट 1 में आपसे फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस या आपकी कंट्री से रिलेटेड या पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई भी एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, बट दैट इज ऑल रिलेटेड टू योरसेल्फ, जिससे आप फेमिलियर होते हो, राइट? आपकी लाइफ से रिलेटेड अ काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन और आपका इंटरव्यू होता है. नाउ द बेस्ट वे जिससे आप अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हो इज टू बी कॉन्फिडेंट, राइट? सबसे पहली थिंग इज कि यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, देन अगेन यू गोना हेजिटेट. आप बहुत ज्यादा क्या करोगे? हेजिटेट करोगे, रेपिटेशन लाओगे, सेल्फ करेक्शन करोगे. अगर आपका कॉन्फिडेंस क्या है? कम है. सो मेक श्योर कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है ड्यूरिंग द एंटायर 15 मिनट्स. 11 to 15 मिनट्स के लिए टेस्ट होता है और इस टेस्ट में आपको क्या करना है? अपना कॉन्फिडेंस लेवल फुल ऑन रखना है, राइट? सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द टिप्स and strategies for part 1. As I said, the very first is be confident. अगर आप confident रहोगे, obviously it's gonna boost your image, right? That yes, this person has a caliber and he can speak for the entire 50 minutes in the English language. Next is show interest in the question. जब मैं भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, आई कैन सी दैट सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन आंसरिंग द क्वेश्चन, बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट. सो प्लीज आपको क्या करना है? इंटरेस्ट दिखाना है क्वेश्चन में, दैट यस आप इसका आंसर जानते हो एंड यू कैन स्पीक अबाउट इट, राइट? तो वो रोबोटिक नहीं लगता, राइट? बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने 2 लाइन्स लर्न कर रखी है और आप वो बोल रहे हो, तो वो रोबोटिक लगता है. सो मेक श्योर यू लाइवली आंसर योर क्वेश्चंस. अवॉइड गिविंग yes और no आंसर. आपको yes और no में आंसर नहीं देना. दिस इज अ स्पीकिंग टेस्ट. अगर आप शॉर्ट में आंसर दोगे, हाउ दे गोना इवैल्यूएट? वो आपको इवैल्यूएट ही नहीं कर पाएंगे, राइट? सो प्लीज गिव योर आंसर इलैबोरेटेड वन. अगर आप सिर्फ yes और no में आंसर देते हो, इसका मतलब ये है कि आप अनविलिंग हो आंसर के लिए. दैट मीन्स आप और नहीं बोलना चाहते या आपको और नहीं आता, राइट? सो ऑलवेज इलैबोरेट, एक्सटेंड योर आंसर. Next step is know the question that you can expect. अब prior knowledge होना क्वेश्चन की. अगर आपको पता है कि पार्ट 1 में आपके ये वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो आप क्या रहते हो? कॉन्फिडेंट रहते हो एंड यू कैन स्पीक अबाउट इट. सो आपको पार्ट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि ये वाले क्वेश्चंस आपके पार्ट 1 में आते हैं. What are the topics जो हम पार्ट 1 में कवर करते हैं? कैसे टॉपिक्स हैं? उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं? You should be knowing about it, right? So prior knowledge रखो पार्ट 1 की कि पार्ट 1 में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं and you have to speak for this much lines. Next, try to expand your answers. अब आपको आंसर्स को एक्सपैंड करना है. As I said कि सिर्फ 1 word sentence या 1 line sentence में आपको आंसर नहीं देना. You should make it for 2 or 3 lines. Try to answer all questions asked by the examiner. कोई भी क्वेश्चन आपका अनआंसर्ड नहीं होना चाहिए. आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है. नेवर से आई डोंट नो. आपको कभी ये नहीं बोलना कि यू डोंट नो द आंसर.
right? So always speak. Whatever you want to speak, you can speak, but don't leave any question unanswered, right? Now, see the very first. Examiner, what happens when you enter the examination hall, the room? Examiner will call your name, right? And or the candidate number. So आपको क्या करना है? You have to smile and respond कि yes, that's me. अगर आपके नेम को कॉल करके एग्जामिनर ने बुलाया है तो आपको वो बोलना है yes, that's me. Walk करो confidently. When you're entering to the room, walk confidently to meet them. Greet karo. It's a good morning, good afternoon, hello, hi, how are you? You should say this to the examiner. ऐसा नहीं कि आप एग्जामिनर का वेट करोगे. अगर उन्होंने आपसे कुछ बोला है, you should also greet them. Then next is sit down at the test table. Breathe in. Get ready. Remember कि आपको स्माइल करना है and appear at ease. ये भी नहीं कि unnatural smile आप बार बार देते जाओगे. No, that's not required. ठीक है. एग्जामिनर रिकॉर्डर स्टार्ट करेंगे, अपना पेपर वर्क रेडी करेंगे. एग्जामिनर आपको बोलेंगे टू शो योर पासपोर्ट, दैट मीन्स योर आइडेंटिफिकेशन. आप टेबल पे वो आइडेंटिफिकेशन रखो, राइट? एग्जामिनर विल रीड आउट द डिटेल्स. एग्जामिनर डिटेल्स रीड करेंगे. कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे कि आप कौन हो, वेयर आर यू फ्रॉम, हु यू आर. So you have to answer this question very briefly, that where are you from. Do not ever produce a memorized answer. आपको कोई भी robotic रट्टा हुआ आंसर नहीं बोलना. You should know about your location, your city, why it is famous. ये आपको generally भी पता होना चाहिए, right? नेक्स्ट इज एग्जामिनर विल चेक्स योर आईडी. अब एग्जामिनर आपकी आईडी चेक करेंगे, फोटो चेक करेंगे, राइट? एंड देन ही विल हैंड ओवर दिस आईडी टू यू and then he will begin with the question part. Examiner will ask you, what do you do? Where do you live? Some sort of questions will be this. So this kind of familiar questions will be asked in the beginning. Now, one thing is, examiner will ask you two questions, work and study. So now you can choose one of the option. Don't tell examiner. Now, suppose some students, some candidate, they work also and they study also. So if you say that I'm working and studying both, so examiner will ask questions related to both study and both work part. So you can choose here wisely. आप एक को choose करो. You can only talk about that you are working. Do not tell them that you are studying also. Or vice versa. You can tell them that you are studying, but not about working part. So examiner will be asking you question either study or work. If you don't study or work, then आप actually बोल सकते हो कि yes, I am stay at home parent, right? Or whatever you do. So you have to choose wisely. Got it, everyone? For study and work part? Yes? Yes, ma'am. Okay. So choose Yes. the topic wisely. अगर आप work choose करोगे तो work based question ask करेगा examiner. अगर आप study choose करोगे, so he will ask you question based on study part. So it's up to you. You have a choice, right? Now see the next part. See the screen. Listen to the tense and make sure your answer matches the tense. This is very important कि आप tense को सुनो. What examiner is asking and in which sentence, which tense basically. What do you study? So what do you study means he is asking you about present part. कि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, right? So you have to answer in present. आप भी present में answer दोगे. I am studying science at university. This is an answer in present tense. But if examiner asks you, what did you study? So that means he is asking about past. He used did. One more important thing, if any of you are facing difficulty with tenses or sentence structure, please go to the grammar sessions, clear out your doubts and watch all the grammar part. So if we ask you, what did you study? You have to answer in past. I studied
science when I was at university. तो past में पूछा तो you are going to answer in the past tense. Next, what will you study? So will means he's asking you about the future part. You will answer in future. I am planning to study science in the future. So here one thing important is that you have to focus कि what examiner is asking. Examiner कौन से tense में पूछ रहे हैं. You should keep in mind and then you have to answer. Okay. Next is extend your answer. You always have to extend your responses so that you can add some more information to your answer. एग्जामिनर आपसे एक्सटेंड करने को बोले इससे पहले ही आपको अपने आंसर को एक्सटेंड करना है. अदरवाइज एग्जामिनर विल आस्क यू व्हाई एंड व्हाई नॉट. सो यू शुड मेक इट क्लियर कि आप पहले ही एटलीस्ट 2 to 3 सेंटेंस में आंसर दो सो दैट एग्जामिनर आपको प्रॉम्प्ट ना करे एक्सटेंड करने के लिए. आपने पहले ही वेल रिस्पॉन्स आंसर दिया हो. ओके. Now, like suppose your question is, what do you study? So he is asking in present tense. So you can say, I'm studying science at university because I have always wanted to be a scientist. Right? So this is an extended answer. कि आपने अपने answer को extend करा. What did you study? Again, it's a past tense. I studied science when I was at university and now I'm preparing to do my doctorate. Now see, now I'm preparing, ये चलेगा, present tense बोल सकते हो यहाँ पे, but आपने past से start करा. That is very much required. आप extend उसको कैसे भी करो, but अगर past में पूछा गया तो first response should be in past and then आप उसको extend करो. Okay? Next, what will you study? Future. I'm planning to study science in the future as I believe scientists will help us deal with future environmental issues. Clear everyone that how you have to extend your answer in part 1. This is very important कि आप अपने answers को extend करो. Only yes and no में और single line sentence में answer आपको नहीं देना. This is a speaking test. You have to speak. राइटिंग टेस्ट में हम राइट करते हैं, 250 वर्ड्स लिखते हैं, 150 वर्ड्स लिखते हैं. रीडिंग टेस्ट में हम रीड करते हैं अपने पैसेजेस को और आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं. सो दिस इज अ स्पीकिंग टेस्ट. वी हैव टू स्पीक अ लॉट. राइट? क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज, मैम एक क्वेश्चन था. यस मीत प्लीज. मैम जैसे कि स्टार्ट हमने पास्ट में करा है तो मतलब हम एक्सटेंड उसे प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं. यस एग्जैक्टली. ऐसा नहीं है कि आपको सारी स्टोरी अपनी पास्ट से रिलेटेड, बट यस अगर आपसे पास्ट का पूछा गया कि आप पास्ट में क्या पढ़ते थे तो पहले तो आप बताओगे ना कि मैं क्या पढ़ता था पास्ट में. राइट? अब क्या कर रहे हो वो आपने एक्सटेंड करने के लिए आंसर दिया. राइट? या फिर आप ये भी बता सकते हो कि आप पास्ट में साइंस क्यों पढ़ते थे. I studied science when I was at university because I had a keen interest in science, or you can talk about the subject. है ना? So it's up to you. जिस टेंस में पूछा. Yes, Meet. हम ये कह सकते हैं कि हम प्लानिंग फॉर डिफरेंट थिंग्स लाइक आई एम डू समथिंग इन पास्ट बट आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग एल्स. Yes, लाइक correct. आप बोल सकते हो. पास्ट में पूछा है, पास्ट का आंसर दो एंड देन एक्सटेंड योर आंसर. सी स्पीकिंग में देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर. आपका कोई सही या गलत आंसर नहीं होता. आपकी स्पीकिंग जो इवैल्यूएट होती है वो आपके बैंड पैरामीटर्स पे होती है. वो कभी भी आपके रिस्पॉन्स को इस चीज में जज नहीं करेंगे कि आपने साइंस क्यों बोला, आप यूनिवर्सिटी में क्यों थे, आपने डॉक्टरेट करी, आपने अपना आइडिया अब चेंज कर दिया. दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस. ये आपका रिस्पॉन्स नहीं है. आपके रिस्पॉन्स को जो रिकॉर्ड करके चेक किया जाता है उसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपने वोकैबुलरी कैसे यूज करी, आपकी फ्लुएंसी कैसी थी, आपकी कोहेरेंस कैसी थी, ग्रामर कैसी थी, ये सब इवैल्यूएट होता है. कोई राइट या रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं होता. आप जो रिस्पॉन्स दोगे वो भी करेक्ट होगा बट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग. जो आपने बोला है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए. गेटिंग क्लियर? मी? ओके. यस मैम.
नेक्स्ट इज प्रिपेयर फॉर दीज फेमिलियर क्वेश्चंस. अब एज आई टोल्ड यू कि आपको पार्ट 1 के बारे में पता होना चाहिए कि पार्ट 1 में कैसे क्वेश्चंस आएंगे. फर्स्ट इज आपका इंट्रोडक्शन होगा, रिलेटेड टू योर फैमिली हो सकते हैं क्वेश्चन, वर्क और स्टडी से रिलेटेड, होम टाउन से रिलेटेड, एंड देन 2 बेसिक टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द पार्ट 1, राइट? Next is speak clearly at good pace. Now pace means the speech, कि आपकी स्पीड कैसी है, राइट? सो मेक श्योर व्हेन यू ओपन योर माउथ आप क्लियरली वर्ड्स को बोल पाओ. आपको बहुत क्विकली नहीं बोलना, बहुत स्लोली नहीं बोलना. स्माइल ओकेजनली करना है जब आप बोल रहे हो, राइट? एंड समटाइम्स सम स्टूडेंट्स बहुत धीरे धीरे एंड जैसे मुंह में बात करते हैं. नो, यू हैव टू बी क्लियर. You cannot be slow, you cannot be loud. You have to maintain a calm speed. ठीक है, तो आपको ऐसे बात करनी है. That means you have to speak clearly. आप अपनी intonation check करो. Now sometimes when I speak, right, तो मेरी pitch क्या होती है? High होती है, low भी होती है, right? So you have to maintain that pitch. Stress करो important words पे, contrast पे show करो अपना stress, right? Now see here, well. So जब मैं well बोलूंगी, I'm giving a little stress. Well, when I was younger, I loved candies. But now that I'm older, I hate them. So आपको वो maintain करना है. आपको accent को copy नहीं करना. Accent doesn't matter. Accent कभी matter नहीं करता, but yes, pronunciation matter करती है. Right? So please speak clearly with a good speed. नेक्स्ट इज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप एग्जामिनर से पूछ सकते हो कि कुड यू रिपीट दैट प्लीज, व्हाट डज डैश मीन्स. तो आप वो वर्ड पूछ सकते हो, बट नॉट एवरी टाइम. ऐसा नहीं कि आप हर 2 से 3 क्वेश्चन के बाद यही सेम एग्जामिनर से पूछोगे. नो, बट समटाइम्स अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, यू नीड सम क्लैरिफिकेशन, तो आप एग्जामिनर से उसके बारे में पूछ सकते हो. Clear everyone? Yes, ma'am. Okay. Now let's move further. One thing I want to tell you about familiar topics also, that always go to the IELTS official site, IELTS IDP official site, and this is an audio. What you are supposed to do, you have to listen to this Ashish from Nepal. It's a live speaking test, जो recorded test YouTube पे already uploaded है. आप इसको देखो, ठीक है? इट्स आफ्टर क्लास प्रैक्टिस. आप इसको जरूर देखना आज. आईएलटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट यूट्यूब पे जाकर आशीष फ्रॉम नेपाल, आप इस टेस्ट को सुनना. इफ ही रिसीव्ड बैंड 7.5, उसको अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए बैंड 7.5 मिला था, एंड उसमें पार्ट 1 के क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो दिस आशीष फ्रॉम नेपाल सिर्फ पार्ट 1 का टेस्ट है, नॉट पार्ट 2 एंड पार्ट 3. So जो टॉपिक्स थे दैट इज अबाउट फ्रेंड्स, फूड एंड कुकिंग. कैसे उसने आंसर्स को एक्सटेंड करा, कैसे रीजंस दिए, कैसे एग्जामिनर ने व्हाई एंड व्हाई नॉट वाली सिचुएशन अराइज करी, और उसने खुद भी एक्सटेंड करा अपने आंसर्स को. ओके, सो यू कैन सी दैट. Do I need to share the link or you people can find it on YouTube? Yes, everyone? Yes, Jyoti? हम ढूंढ लेंगे. We can. Yes. Okay, great. But do watch मैम that. एक क्वेश्चन था जिसकी ये एग्जामिनर सामने से हमसे लाइक पूछ सकता है कि वाई और वाई नॉट का, या फिर हम अपने आप ही एक्सप्लेन करने की लाइक देखो, हमने ये क्यों करा. अगर आप नहीं करोगे वाई एंड वाई नॉट वाली सिचुएशन, अगर आप सिंपली 1 सेंटेंस में आंसर दे देते हो, सो एग्जामिनर विल आस्क यू व्हाई. नाउ सपोज examiner ask you, how do you spend your leisure time, and you say that I spend my leisure time by roaming around the park. Just a simple sentence you have said. So he will ask you why, क्योंकि आपने आंसर को एक्सटेंड नहीं करा.
सो इट्स बेटर कि आप ऑलरेडी अपने आंसर को एक्सटेंड करो, नहीं करोगे तो ही विल आस्क यू और यू विल बी स्टक टू द एवरेज बैंड लेवल, है ना। आपकी स्पीकिंग एबिलिटी यहाँ पे चेक करी जा रही है और अगर आप स्पीक नहीं करोगे, हाउ दे गोना इवैल्यूएट, राइट। थैंक यू। नाउ सी द प्रैक्टिस क्वेश्चन, यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लीज सेव दीज क्वेश्चन, दीज आर अबाउट फ्रेंड्स। सो आर योर फ्रेंड्स मोस्टली योर एज और डिफरेंट एजेस, व्हाई, सी हियर, है ना। सो यू कैन नॉट से सिंपली, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे सारे फ्रेंड्स इज ऑफ लाइक माई एज, है ना। Why they are of your age or why they are of different ages, you have to explain that. Do you usually see your friends during week or at weekends? So you have to explain कि आप week में मिलते हो या weekends में मिलते हो, कैसे मिलते हो, you have to extend your answer. Same goes for here. What kind of new food would you like to try? अगर आपने बोला that you want to try Chinese or Italian food, but try क्यों करना है, why तो बताओ, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक कुकिंग? आपने बोला आई डोंट लाइक कुकिंग, व्हाई यू डोंट लाइक कुकिंग, आपको क्यों नहीं पसंद कुकिंग, ये आपको बोलना है। एग्जामिनर आपसे तब व्हाई और व्हाई नॉट बोलता है जब आप आंसर वेल रिस्पॉन्स नहीं देते। अगर आपने वेल रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स नहीं दिया, ही विल आस्क यू व्हाई एंड व्हाई नॉट, राइट। तो मैम पे इस बैंड पे स्कोर पे फर्क पड़ेगा अगर ऐसे अगर हमने नहीं दिया आंसर ऑब्वियसली, तो? यस यस, ऑब्वियसली अगर आप एक्सटेंड नहीं करते अपने आंसर को, यू विल बी लाइंग ऑन 5.5 अप्रोक्सीमेटली, नॉट अबव दैट। वो भी डिपेंड करता है कि आपने रिस्पॉन्स कैसा दिया, अदरवाइज यू मे स्टक एट 5 ऑल्सो। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पार्ट 1 में 2 to 3 सेंटेंस का आंसर दो। देखो बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, योर नेम, योर फैमिली, उसमें आप 2 सेंटेंसेस से ज्यादा नहीं बोल सकते, बट जब ये टॉपिक्स आ जाते हैं पार्ट 1 के, हियर यू कैन एक्सटेंड, तब आप 3 सेंटेंस भी बोल सकते हो कि व्हाई यू डोंट लाइक कुकिंग, क्यों नहीं पसंद आपको कुकिंग, व्हाट वाज द लास्ट मील यू कुक्ड, राइट। तो हियर यू कैन एक्सटेंड योर आंसर, यहाँ पे अपने आंसर्स को आप एक्सटेंड कर सकते हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि पार्ट 1 के जब टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, आप उनको एक्सटेंड करो, वेल रिस्पॉन्स आंसर दो कि एग्जामिनर को आपको प्रॉम्प्ट नहीं करना पड़े व्हाई एंड व्हाई नॉट के लिए, राइट। दिस इज द पार्ट 1, है ना। पार्ट 1 इज लाइक अ फर्स्ट इमेज आपकी बन रही है कि आप कितना बोल सकते हो। सो स्पीक एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट इज यूज फंक्शनल लैंग्वेज। नाउ फंक्शनल लैंग्वेज विल शो कि आपके पास लैंग्वेज और आइडियाज को कीप करने के लिए कुछ फंक्शंस है। फंक्शंस मींस अ काइंड ऑफ कुछ फ्रेजेस है जिनका आप यूज करते हो और उसके थ्रू आप क्या करते हो, कीप स्पीकिंग। अब कुछ लाइक कुछ एड ऑन्स होते हैं ना अपने आंसर्स को एक्सटेंड करने के लिए, तो ये वो एड ऑन्स हैं, ये वो एग्जाम्पल्स है जिनका आपको यूज करना है व्हेन यू वांट टू एक्सटेंड योर आंसर, राइट। इससे आपकी लैंग्वेज शो होती है दैट यस यू कैन एक्सटेंड, इंट्रोड्यूस करके अपने आंसर्स को। आई वंस, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज, बैक व्हेन आई वाज, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हेन, just the other. Now suppose अगर आपका question था what was the last meal you cooked, so you can say I don't remember exactly when but I think it was last month or 2 months back. So you are using a functional language, आप functional language का use कर रहे हो यहाँ पे। स्ट्रेट अवे नो कहने से कि मुझे नहीं पता मैंने लास्ट मील कब कुक करी थी, आपने क्या बोला, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हेन, so you are using the functional language. Got it everyone? यस मैम। मैम इसको हम पार्ट 2 और 3 में भी यूज कर सकते हैं ना फंक्शन लैंग्वेज को? 3 में not exactly because 3 part 3 is basically about more opinionated answers. उसमें आपको ओके। कंपैरिजन और ओपिनियंस ज्यादा देने होते हैं, ठीक। वहां पे पर्सनल क्वेश्चंस कम होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स कैन बी यूज्ड इन योर पर्सनल पार्ट, पार्ट 1 ओके। और पार्ट 2, राइट। नाउ व्हाट डज द एग्जामिनर एक्सपेक्ट, एग्जामिनर क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं? नाउ एग्जामिनर एक्सपेक्ट
कि आप रिलैक्स करो। रिलैक्स इन द सेंस दैट मीन्स आपको जो आंसर देना है, you should more talk like a human being, not like a computer. Sometimes some student they prepare for exam कुछ ऐसे आंसर्स लर्न करके, सी दे आर एग्जामिनर, आप एग्जामिनर के सामने बैठे हो, दे टेक नंबर ऑफ टेस्ट एवरी डे, सो दे नो कि किस कौन सी वेबसाइट पे कौन सा आंसर अवेलेबल है और कौन सा मेमोराइज्ड आंसर है, राइट? सो मेक श्योर यू नेवर मेमोराइज एनी आंसर, आप नेचुरली आंसर दो, मेक इट लाइक अ कन्वर्सेशन, आपकी और आपके एग्जामिनर की एक कन्वर्सेशन चल रही है आपसे ना। सपोज इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, आप कितने काम होके आंसर दोगे ना, बट इट्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? सो मेक श्योर कि आप ये बिहेव करो दैट यू आर टॉकिंग टू अ रियल पर्सन, नॉट अ कंप्यूटर। सो आप बीइंग अ ह्यूमन बीइंग नेचुरली साउंड करो, मोर नेचुरल, ओके? रिमेंबर इट्स अबाउट यू, ये आपके बारे में है, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। सो सारे क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड है, आपको मेमोराइज करने की नीड ही क्या है? आपको अपने बारे में नहीं पता? What kind of vegetables do you like? What bicycle do you ride? What kind of headphones do you wear? Where is your hometown? Right? So अपने आप से familiar हो, prepare yourself. Not too short. Short answers आपको नहीं देने, इससे एग्जामिनर को इनफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, दैट मीन्स उनको रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलता, दे कांट इवैल्यूएट यू। सो यू कैन एक्सटेंड योर आंसर, आप अपने आंसर को एक्सटेंड करो। सो एक्सटेंड योर आंसर, एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल्स दो, एनी हाउ जैसे भी आपको बोलना है, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू एक्सटेंड योर आंसर, नॉट टू लॉन्ग। स्टोरीज क्रिएट नहीं करनी बहुत ज्यादा पार्ट 1 में कि आप 4 to 5 सेंटेंसेस तक बोलते जा रहे हो, नो, अननेचुरल साउंड नहीं करना, राइट? सो बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर नहीं, 2 to 3 sentences as I said is good enough for your part 1. क्लियर? सो 2 to 3 सेंटेंसेस तक के लिए ही आपको प्रिपेयर करना है अपने पार्ट 1 के क्वेश्चंस। नाउ सी सम कॉमन क्वेश्चंस अबाउट योर जॉब एंड स्टडी, तो आप उसे इजीली बता सकते हो। डोंट वर्क और स्टडी, एक्सप्लेन करो व्हाई और व्हाई नॉट। होम टाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहाँ पर है आपका होम टाउन, कैसा है, डिस्क्राइब करो। वो आपसे ओपिनियन भी पूछ सकते हैं आपके होम टाउन से रिलेटेड, सो प्लीज स्पीक अबाउट योर ओपिनियन ऑल्सो कि आपका होम टाउन कैसा है, डू यू लाइक इट, डू यू लाइक टू लिव इन द फ्यूचर ऑल्सो। सो ये आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है कि आप फ्यूचर में भी रहना चाहते हो होम टाउन में कि नहीं। आपके होम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फ्रेंड्स, सो प्लीज स्पीक अबाउट इट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 sentences. Some common topics part 1 के, these are the most common topics जो आपके पार्ट 1 में आते हैं। टाइम, टेलीविजन, स्पोर्ट्स, इंटरनेट, बुक्स, फूड, वेदर, फैमिली, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, as I can see on my screen, do you work or study? This question is for Deepika. Yes, Deepika. Yes, Deepika, the question is for you. Do you work or study? Deepika, you're not there. Okay, Meet, do you work or study? And Hmm. I currently preparing for my exam, which is for MBA, and I'm not currently in working or even anything else. So do you work or study? I'm currently preparing for my IELTS exam. Right? You're not in any kind of work, so do not talk about it. Or you can say that I do not work. I'm a student.
I'm preparing for this. I have graduated a few years ago, right? और अगर आप काम करते हो, you can talk about it that I'm in a full-time employment. I'm working as this and this. है ना? You should not hesitate. Okay, next question, Baljinder. Why did you choose that job? If your part one question is about work, why did you choose that job? Yes, Baljinder. Okay, next, Jyoti. Why did you choose that job? Yes, Jyoti. Why did you choose that job? Komal, do you want to answer? Anybody who wants to answer this? Yes, please. मैम Okay. जॉब करते नहीं है पर या आप मैं एग्जाम का बोल सकता हूँ लाइक मैं एग्जाम क्यों देना चाहता हूँ. You can. Suppose आप नहीं करते, ठीक है, but still you need to answer why did you choose that job? अगर आप करोगे, suppose you are working, फिर आप क्या आंसर दोगे? ओके. Why did you choose that job? क्यों job? Because I have a keen interest in that particular job in Yes, past, and I want to explore that opportunity for exploring my own caliber in that right, field. That's why right. I selected that job particular. Exactly. तो आपको कोई भी क्वेश्चन को अनआंसर नहीं करना, ठीक है? यू शुड नो कि आपको आंसर करना है. आप कोई भी आंसर को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, राइट? इट्स नॉट कि आप मतलब ये नहीं. कुछ पता ना हो उसके बारे में, मतलब फिर भी हमें कुछ ना कुछ बताना, मतलब कि अगर हम Yes. करेंगे तो. Why did you choose that job? Now, suppose I say that previously I was a lawyer and I find it that it was so stressful and I never had a free time. So I quit that job and I thought teaching, which is completely opposite, but it's less stressful and more time off. So I'm working as a teacher right now, right? So आपको आंसर करना आना चाहिए, right? मैम. Okay, next question. Where is your hometown? Anybody who would like to answer? Where is your hometown? Yes, Kashyap, would you like to answer? Yes, ma'am. Hmm. My hometown is Tandavur. It is located in district Hoshiarpur, Punjab. And in my hometown, there is all basic facilities available like hospital, education institute, and basic jobs. Good. So you can talk about your hometown. Hometown कहाँ पर है, कौन सा place है, name बताओ उसका, right? Okay, next question. How often do you मैम एक visit your? क्वेश्चन था. Yes. मैम जैसे कि क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि वेयर इज योर होम टाउन, Hmm. सो एक्सटेंडेड आंसर में हम ये कह सकते हैं लाइक ये जिस जिस चीज मतलब ये चीज हमारे होम टाउन की फेमस है, लाइक जबकि क्वेश्चन में उसमें उन्होंने ये नहीं पूछा कि Yes. व्हाट But इज फेमस उसने, फॉर. yes, exactly. That was my point also. But कश्यप ने ये बताया कि where is your hometown, है ना? उसने पहले explain करा कि मेरा hometown यहाँ पर है. फिर उसने extend करने के लिए hometowns के कुछ फीचर बता दिए. That is good. वो आप बता सकते हो. There is no negative marking for that. But पहले तो क्या हाँ फर्स्टली पूछा था? हमें वो एक्सप्लेन करना जरूरी है, अगर Yes. फर्स्टली में हमें. अगर वो सीधा अपने फीचर्स बताता अपने होम टाउन का और ये नहीं बताता कहाँ पर है, then that is not a required answer, right? ओके ठीक है. How often do you visit your hometown? So next For question is, me, anybody who would like to answer? So how often do you visit? मतलब आप कितना visit करते हो? You visit once a year
or every month or in 6 months to see your family because you're busy with your work, right? And it's quite far away also. So आप ये बताओ कि आप कितना विजिट करते हो अपने होम टाउन को. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ योर होम टाउन. तो अपने टाउन का मतलब अपने होम टाउन का ओल्डेस्ट पार्ट बताओ कि दिस प्लेस और दिस टेम्पल इज द ओल्डेस्ट पार्ट. वो कहाँ पर है ये बताओ. कैसा व्यू है वो बताओ. कैसे आप जा सकते हो उस पार्ट के लिए. टॉक अबाउट द ओल्डेस्ट पार्ट. क्लियर. नेक्स्ट, योर होम से रिलेटेड क्वेश्चन. वेयर डू यू लिव. मैम कुछ ज्यादा लंबा आंसर नहीं रहेगा अगर हम ये सब चीजें बता देंगे एक ही क्वेश्चन में. एटलीस्ट 2 to 3 sentences. इट्स वेरी सिंपल. ओके. देखो आपका कैसे होगा. अगर आपने बोला सपोज देयर इज एन ओल्ड कासल इन माय होम टाउन विच इज इन द हिलेस्ट एरिया ऑफ माय टाउन. वो ruin हो गया बट स्टिल इट हैव अ ब्रीथ टेकिंग व्यू एंड इट्स वेरी इजी टू मूव देयर. दैट्स इट. 3 sentences इनफ. आपने ये भी बताया कि वो ओल्ड टाउन है, हिली एरिया पे है, ब्रीथ टेकिंग व्यू है और हम वहां पे इजीली जा सकते हैं. सो 3 sentences. आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करो ना. ऐसे मत बोलो इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस. नो, ऐसे तो आपके 4-5 सेंटेंसेस हो जाएंगे क्रिएट. मेक श्योर यू नो हाउ टू यूज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ओके. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी वेयर डू यू लिव. आपके होम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए. व्हाट इज योर फेवरेट रूम. आपका कौन सा फेवरेट रूम है. ओके मीत, वुड यू लाइक टू आंसर. व्हाट इज योर फेवरेट रूम. Yes, my favorite room is my own room. I spend my most of the time in my room. Moreover, I like to work and spend my half of the day in my room. I can do my study That's as well enough. as. That's enough. That Okay. was enough. Yes. So what's your favorite room? It's my own room. I can study in my room where I can get peace and quietness also. And even I can concentrate on my work. Now, home related question. One more it can be. How is your apartment decorated? Or how is your home decorated? Yes, Kashav? I live in apartment. It's a 2-bedroom apartment, and Now, it is you're not required to designed. say that I live in apartment. Because if they're Okay. asking you how your apartment is decorated, you need not to mention that I live in apartment. है ना? How it is decorated. So start with the decoration part. Okay. I decorated it by my choice. Like it's a light color, painted by it's a light color painted, and so और क्या बोल सकते हैं इसमें. There's a Furniture, little repetition which also. So the walls are white and the furniture is either white or black in color. There are few colors, pictures yeah. because I like to keep things quite minimal. I know. Okay. Talk about the decoration part. How's the curtain? How's the apartment? You can talk about it. Okay. Next topic could be about food. What's your favorite food? Yes, Meet. What's your favorite food? Anybody who would like to answer this question? Yes, please. What's your favorite food? Anybody else except Kashav and Meet? All are on the mute mode today, right? Okay, Meet. Yes, please. What's your favorite food? Generally, I prefer to eat my home cooked food more rather than eating outside because it is more healthier and I love my mom's cooking food, cooked food, Home cooked food. home cooked food. Yes. So, More. right? Home cooked food. Correct. Next, Kashav. Yes. Have you always liked that food? Yes, I like my traditional food because it's more healthy, and I always want to eat that food. And you can even make a contrast that I don't like eating the meat or this Outside. kind of food. Yes. I always Okay. prefer home cooked food because it has all the nutrients. Right? Okay. It's not कि आप ये नहीं बता सकते कि आपको कौन सा नहीं पसंद. आपको हमेशा से ऐसा Okay. food पसंद है? Yes, पसंद है. Right? Or you can make a contrast that when I was younger, I liked meat. But when I was grown up,
Then I know the quality of the food in the market, so I switch to the home cooked food. Okay. Okay. Next question. Do you like spending time by yourself? Yes, Meet. Do you like spending time by yourself? Meet, are you there? Yes, ma'am, I am there. Yes, please. Yes, I like to spend time with Hmm. myself because whenever I spend time with myself, I am got to know about myself more, and also I find peace with Hmm. myself. Hmm. Generally, I like to go out for a walk, Hmm. and also sometime I went for a like bicycle walk is on my bicycle Hmm. just to spend some time in Hmm. my own day. Right. So sometimes I like to be alone to enjoy that private times, which make me think of something and I can relax also. So I love spending time by myself, right? And even I don't mind being alone. Sometimes some people are like, they do mind when they are alone, but some people they don't. Okay, next for Kashav. What did you do last time you were by yourself? Sorry, ma'am. What is the question? What did you do last time you were by yourself? Uh, at last weekend, I was alone at home. Hmm. I cooked my favorite meal, that is kheer. It's a sweet dish. Mm-hmm. Uh, so with that sweet dish, I enjoy to watch my favorite movie. Mm-hmm. So last weekend I spent That's good, that. but last line was repeated again, है ना? Because you have already mentioned. So that's Okay, good. ma'am. You can also talk about that I read a book, the bedtime Yes, that ma'am. completely belongs to me. So I read books at that time. I read this book, but that was also a good story that you said that you cooked something. So you can elaborate a Yes. little bit more that the cooking took almost 1 hour. Then after that 1 hour, I spent some time by watching my favorite movie. Okay. Okay, now next question. For Meet, are water sports popular in your country? Mhm. Are water Yes, sports popular in your country? yes, I think in some cities water sports are very popular, and majority of the people likes to explore that thing. But in my country, like in my city, I don't think it is more popular. Mm-hmm. They're asking about your country. And see, sometimes you can also answer. Now, suppose if you do not have any idea कि वो popular है कि नहीं, so you can say, I'm not that sure. But what I believe is young people, they tend to enjoy water sports like scuba diving, surfing to have fun. But for other people like older generation, they are not into that. So you're talking about your country because country includes both younger generation as well as the older generation. And you're not sure about it, so you're answering in that way. An examiner will not bother कि आपने ऐसा क्यों बोला, right? You're clearly saying that I'm not sure about it. What water sports do you like? I like variety of. Mm-hmm. Unfortunately, I didn't get a chance to try water sport, but in future, if I would like to try scuba diving and surfing because these are the most popular water sports in my Mm. knowledge, and I want to try it in the future. Yes, good one. Okay, next question is about break. How often do you take a break? Yes, For me, Kashav? Yes, Kashav? I am a heavy duty truck driver, so I prefer to take break after 6 hours, and my total shift is 12 hours.
So Yeah. you're not allowed to take breaks, right? So my breaks is Yes. usually after 6 hours or 6. yes, 6 hours, right? So I take Yes. breaks often while I'm working, and it's very difficult to concentrate for a longer time. So I usually take my break after 6 hours. 6 hours. Yes. Okay, what do you usually do during a break? Uh, in that break time, I have 30 minutes, so I prefer to drink coffee, Hmm. or sometimes I prefer to use my mobile phone Mm-hmm. because I can't use mobile during my job. Hmm. So mostly I do take coffee or Hmm. using phone on my break. So whenever I take a break, I choose to listen to the music to relax. I close my eyes, give a short rest, or I use my mobile phone or any of the applications, right? Or you can watch Yeah. a short TV episode or something, whatever gives you energy, and you can return to your work. Well, Okay. yeah. So this Okay. was all about part 1 questions. We have done so much practice of part 1 as well. I hope now you got an idea that how you're supposed to practice or strategize for your part 1 questions.